Hello and welcome. You're watching NewsX with me, Devika Chopra. 3 years ago, NewsX held a special interview with a biographer called Andrew Loney. Andrew Loney was fighting a battle against the British government to disclose papers and diaries of Louis Mountbatten, India's last Viceroy and first Governor-General. In our interview, Mr. Loney detailed how the British government has kept the Mountbatten diaries hidden, refusing access to biographers and others on the grounds that they were communications either with the sovereign or that they could potentially damage international relations and national security. Today, an Indian historian, Dr. Rizwan Qadri, has also made a similar big claim. He says that many papers and diaries of India's first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, have been taken away, with some papers even being destroyed. Dr. Rizwan Qadri is a historian and a researcher who has worked extensively on the life and story of Sardar Vallabhbhai Patel. He feels that to understand Mahatma Gandhi, to understand Sardar Patel, one has to read the Nehru papers as well. Sonia Gandhi, viewers, became the legal heir to the Nehru papers after the year 1946. The pre-1946 papers are open to public, but access to the post-1946 papers, which could include important details of India after independence, can only be examined after prior permission of the donor, which in this case is the Gandhi family. The pertinent question today is, why were some of these papers taken away? What was in them that some have now alleged that a few papers have even been destroyed? Today, I'm being joined by Andrew Loney and Dr. Rizwan Qadri, both of whom have been fighting their own battles to have papers and diaries of historically significant leaders declassified. Let me begin this conversation. I firstly thank, of course, Dr. Rizwan Qadri and Mr. Andrew Loney for joining us today. But let me begin the conversation with Dr. Rizwan Qadri. Dr. Qadri, in your recent interview, sir, you've made a big claim, and that claim has gone viral at this point in time, wherein you've said, okay, all right, we've lost our line with Mr. Qadri. We will have him back in just a short while from now. Let me go across to Mr. Andrew Loney. Mr. Loney, I've just detailed the interview that our channel had conducted with you 3 years ago, sir, where you said that the censorship of the Mountbatten papers continues. If you could just share with our viewers the status of the case today. The status of the case today is that the hearing was held in November 2021, and literally on the eve of the hearing, the government and Southampton University released 99.9% of the personal diaries and letters of Lord and Lady Mountbatten, including the period over independence. Some 33,000 pages and the biggest ever release of FOI material. So if you want, you can actually look at this material. There were about 100 redactions on the grounds of relations with Pakistan and India, and on, as you say, the royal family exemption, which we just don't know what those small exemptions are. Often they're just a name. But I think what happened when these papers were purchased, and they were purchased for several £million with British taxpayers' money to be open to scholars, they also bought the correspondence between Nehru and Edwina, stretching from 1946 through to her death in 1960. Sorry, 47, I think that begins. And the only condition was payment of a £100 option in order to release these papers, because they've basically been bought already. Now, for some reason, and they won't give us the reasons, both Southampton and the Cabinet Office have kept these papers closed. We were aware from one of actually Nehru's biographers, Walpert, many years ago, that there would been some second arrangement between the family and the Mountbattens not to release this correspondence without the cooperation of both of them. But I'm still fighting this case. I'm still trying to find finance to do so. My last case cost me £500,000. But if I can get the money to fight the case, I intend to take this through the courts again, because this was money that was spent by the public for this historically important collection, which I think would shed new light on independence and how close the relationship was between the Indian leader and the Viceroy's wife.
Okay, Ms. Lani, keeping some of the personal aspects of the relationship aside, I just want to understand from you, what is the crucial reason as to why you feel that some of these papers need to be made public? What are the links that you are looking for as a biographer and historian? Well, I mean, this was a seminal moment in Indian history. This is the independence, partition, the early days of the Republic. We want to know how neutral Mountbatten was as viceroy. Was there any favoritism shown to either Pakistan or India? We want to know how important an influence Edwina may have been on Nehru in the early days of the Republic. And the point is that these papers were bought to be seen, and there's no reason for them to be closed. We know that there was a relationship between Edwina and Nehru. That's not a secret. And so it's not about tittle-tattle. It is about having a ringside seat as history is being made. So what you're saying is that the information contained in these papers is beyond gossip. Yes, of course it is. I mean, you know, she was a very important advisor, in effect, to him and to Mountbatten. And in order to understand partition, independence, as you say, the early days of the Republic, we need to know what was really happening behind the scene. And we have to wonder, why are they keeping this material secret? I discovered when they released these 33,000 pages a few years ago that they'd been fighting a 10-year battle and the material was completely innocent. And I suspect the material here will be pretty innocent. We've already had several biographies of Edwina. We've had the details of their relationship revealed. Indeed, some of the previous biographers were given access to the correspondence, which is now closed, in order to write those biographies. So it's a matter really of shutting the stable door after the horse has bolted. And Mr. Lani, at the same time, I want to understand from you, because one does not have access to still several papers, so one can only speculate. As you said, that when you had access to the 33,000 pages, you found that the material was in fact quite innocent. But just to speculate a little further, why do you think that certain papers have still been kept away from the public? Is it simply an apprehension in the minds of the government, and are they doing more harm by keeping the papers classified? Well, you know, one can't speculate because one doesn't know what's in it, but one can guess, and one knows a little bit from, as I say, the previous biographers who've been able to quote from these papers. So we do have some indication. I think it's just a culture of secrecy. It's a power game by governments. If it was a matter of keeping something secret, they could redact some pages that they wanted to keep sensitive. But I'm afraid that governments, you know, abuse their position with archives, and they use exemptions to close down papers which should be viewed by scholars. And Ms. Lani, at the same time, I'd like to understand from you. You said that there was some access to correspondence between Mountbatten as well as Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. And you say that some of those pages are also missing. Are there any links that have been found basis what other biographers may have written as to what really was contained in those papers? If you can shed some light for our viewers on the same. Well, the material that's closed is the correspondence between Edwina and Nehru, and that was quoted in Janet Morgan's biography and other books on Edwina. In fact, Edwina cooperated with several biographers before her death and shared some of her private papers. We also have now, as a result of my efforts, the personal diaries of Lord and Lady Mountbatten and their diaries. This is correspondence between a married couple, and there are some references there to Nehru, but not many. And of course, we have Lord Mountbatten's papers and her papers at Southampton University, which again do cover this period. So there is some material, and that's why it's odd that some material is kept back while a large amount of material has already been released. Okay, Mr. Lani, I will come back to you in just a moment. I also have with me Dr. Rizwan Qadri back on the broadcast. Dr. Qadri, आपसे बस यही समझना चाहेंगे, आपने एक इंटरव्यू दिया है कुछ समय पहले जिसमें आपने कहा है ऑन कैमरा एडमिट करा है कि ऐसे कुछ कागजात थे, नेहरू पेपर्स थे, जिन्हें म्यूज़ियम से हटाया गया है और डिस्ट्रॉय भी किया गया है. On what basis have you made these claims, sir? मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय ग्रंथालय का सदस्य हूं.
और बहुत अरसे से मैं 2010 के बाद से कंटिन्यूस काम करता था। तो मैंने एक बार वहां पर काम करते हुए तीन मूर्ति भवन में देखा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति, ज़ईफ व्यक्ति, वो अलग अलग फाइल्स में से कुछ पेपर देखते हैं और उसमें से कुछ पन्नों को वो पेपर श्रेडर में डिस्ट्रॉय करते हैं। अब वो कौन व्यक्ति थे, क्या थे? ज़ईफ बुजुर्ग व्यक्ति थे। तो वहां पर काम करने वाले लोगों को भी पता था कि ये व्यक्ति कौन है, किसके कहने पे वहां आए हैं। और नेहरू पेपर्स जब भी हमको देखना होता था तो हमको पहले डेप्यूटी डायरेक्टर से परमिशन लेना होता था और उसके बाद वो आगे उसके कस्टोडियन जो कहे जाते थे सोनिया गांधी जी, उनकी परमिशन से ही दिखाए जाते थे। ऐसा तो बड़े बड़े लोगों को भी मना कर दिया गया था, क्योंकि मुझे मोतीलाल नेहरू पेपर्स में कुछ देखना था। तो कई दिनों के बाद चेक करने के बाद मुझे बताया गया था, क्योंकि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जी के अंदर हमको देखने को मिलता है गांधी जी का वर्जन। गांधी जी ने जो प्रत्युत्तर रिप्लाई दिया है वो देखने के लिए हमको मोतीलाल जी का वो लेटर देखना पड़ेगा जो मोतीलाल पेपर्स में था। तो मैं कई अरसे से ये डिमांड करता था कि नेहरू पेपर्स का ढंग से सब्जेक्ट वाइज, पर्सन वाइज कोई इंडेक्स, जो सर्चेबल इंडेक्स होता, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी का जिस तरह से इंडेक्स है, हम सरलता से उसको देख सकते हैं। एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर पूरा ये कलेक्शन हमको देखने को मिलता है। तो मैंने जो भी बात कही थी वो रिटर्न फॉर्मेट में उसका डिमांड किया गया था। और मैं लंबे अरसे से जवाहरलाल नेहरू जी और लेडी माउंटबेटन के बीच का जो भी पत्र व्यवहार इस संस्था में था, तो उसके बारे में जानकारी लेना चाहता था। और फिर बाद में पता चला कि वो पूरा कलेक्शन, पूरा रिकॉर्ड वहां पर नहीं है और वो रिकॉर्ड ले जाया। और हमारे चर्चा के दौरान हमारे बुजुर्ग साथी सदस्य राम बहादुर राय जी ने डिटेल में इसके बारे में बताया था कि भूतकाल में भी उन्होंने और मदन लाल जी खुराना ने जो प्रयत्न किए थे, उसी कारण, उसी वजह से वो कलेक्शन वापस आया था। उसके साथ साथ रिटर्न जो रिप्लाई आया है उसके अंदर भी बताया कि और भी कलेक्शन यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि डोनर का ऐसा कहना था कि हमने तो यहाँ पर रखने के लिए दिया था, जी। अब हम वापस ले जाते हैं। कोई भी शोध संस्थान के अंदर आप कोई भी कलेक्शन देते हैं तो उसकी ओनरशिप आपकी खत्म हो जाती है। ये कोई डंपिंग साइट नहीं है या कोई वेयर हाउस नहीं है कि आपने दे दिया, आपने ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी कलेक्शन था वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। और काफी सारा कलेक्शन बरसों से क्लोज था, वो सारा कलेक्शन आज सार्वजनिक किया है। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसी संस्था की वेबसाइट पे सभी संशोधकों के लिए वो सरलता से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बिना उपलब्ध किया जाए। तो डॉक्टर कादरी, आप जो कह रहे हैं कि कुछ कागज़ हटाए गए थे और कुछ कागज़ डिस्ट्रॉय भी किए गए थे, ये आज तक पता चल पाया है कि उन कागज़ों में क्या था? पॉसिबली कोई स्पेकुलेशन है उसके बारे में कि ऐसा क्या था उन कागज़ों में लिखा हुआ, या किसके साथ वो कॉरेस्पॉन्डेंस थी कि वो कागज़ हटाए गए या डिस्ट्रॉय किए गए? जो बहुत सारा कलेक्शन वो वापस ले जाएगा, उसमें कई चीजें रिप्लेस की उन्होंने कर दी होगी, क्या किया है वो पता नहीं। जो मैं जिसकी बात करता हूँ कि वो नाश किया गया था, वो तो उसका ऑडिटिंग किया जाएगा जब पता, क्योंकि एक फाइल में सभी पेजिनेशन किया जाता है तो पेजिनेशन में से कितने पन्ने कम हैं, और उसका जब ढंग से जब हम इंक्वायरी करेंगे तो ये किस लेटर, किस सब्जेक्ट की चीज अगर इसमें से कम है, किस चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो वो जब उसकी जांच पड़ताल होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या चीजें दूर करी गई है, उस दूर करने के पीछे का उद्देश्य क्या था। जैसे सर ने बताया कि माउंटबेटन पेपर्स आज उपलब्ध कर दिए गए, तो उसमें से जो हम मानते थे वो चीज नहीं है, तो एकदम क्लियर होना चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे भारत सरकार का अभिलेख पटल पे काफी सारी चीजें, ज्यादातर चीजें नेशनल आर्काइव्स की आज उपलब्ध कर दी गई है। उसका रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई भी संशोधक कहीं पर भी हो वो अपना काम कर सकता है। तो इसी तरह से जब ये चीजें, इसका इंक्वायरी होगा, बड़े पैमाने पे इसका इंक्वायरी होगा, क्योंकि फाइल के अंदर मुझे ऐसा जानने भी मिला है
के इसके बारे में कुछ नोटिंग भी है, मगर ये सारी चीजें बड़े पैमाने पे हाई लेवल इंक्वायरी होना जरूरी है। इसी का डिमांड मेरा कंटिन्यूअस रहा था और इस दिशा में योग्य कार्यवाही अभी चल रही है। कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी शुरू हो गया है और उसी के बाद आगे प्रक्रिया चलेगी। डॉक्टर कादरी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कोई ऐसे बायोग्राफर्स या हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने कोई रिकॉर्ड्स पढ़े हों और उन्हें लगा हो कि यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट है, कि कोरेस्पॉन्डेंस एक डेट से दूसरी डेट तक है और उसके बाद काफ़ी आगे की कोरेस्पॉन्डेंस है और बीच के कागजात मिसिंग है? एंड मूविंग अवे ऑल्सो फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एडवीना माउंटबैटन सर, क्योंकि वो काफ़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, पर अगर हम एडवीना माउंटबैटन को भी थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें उस इशू को, और कौन से ऐसे लीडर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है जो ज़रूरी है कि पब्लिक को एक्सेस मिल पाए? जैसे सरदार पटेल को समझना है तो नेहरू पेपर्स ध्यान से देखना होगा, बापू जी को, महात्मा गांधी को समझना है तो ध्यान से देखना होगा, मगर पहले तो उसका एक्सेस ही नहीं था। जैसे मैं 24 अप्रैल 1946 का जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जब सवाल आया, 15 में से 12 प्रोविंशियल कमेटी ने सरदार के नाम का प्रस्ताव दिया, तो एआईसीसी पेपर उस तारीख के जब मैंने खुद ने देखे तो उसमें से भी मुझे कुछ मिसिंग देखने को मिला है कि जबकि जवाहरलाल नेहरू का नाम कोई जगह पे नहीं था तो उनका नाम कैसे अचानक आया? सरदार का नाम 12 प्रोविंशियल कमेटी की ओर से आया था, तो फिर सरदार का नाम कैसे हटा? तो वो पूरी चीज़ जो डिटेल होनी चाहिए थी वो ऐसा मुझे नहीं दिखा। ये आप बात कर रहे हैं अबाउट बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट पीएम, द पोस्ट? हाँ जी जी, वही उसी बात करता हूँ 24 अप्रैल। तो ये सारी चीजें मिसिंग लिंक्स है, वो एक संदेहास्पद लगता है और इसके बारे में पूरा डिटेल में छानबीन होनी चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है और यही मेरा रिटर्न में डिमांड भी रहा। तो एट द सेम टाइम डॉक्टर कादरी, लाइक आई सेड, ऐसे कोई और बायोग्राफर्स या हिस्टोरियंस हैं जिन्हें कोई और कोरेस्पॉन्डेंस मिली हो जिससे कोई ये मिसिंग लिंक्स जो आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका सोल्यूशन मिल पाए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कुछ पेपर्स तो आपके सामने ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो अगर वो एक बार ही डिस्ट्रॉय हो गए तो ऑफ कोर्स एक आप कह रहे ऑडिट होगा तो लोगों को पता चलेगा कि इस पेज नंबर से उस पेज नंबर तक पेजेस मिसिंग हैं, या तो वो अभी भी हैं डोनर्स के पास या फिर वो डिस्ट्रॉयड है। जी, तो अब जो उसके पीछे का मकसद क्या? तो डॉक्टर कादरी, आपको लगता है कि कभी मकसद पता चल पाएगा एक्चुअली? क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम उसका वो जैसे एक व्यक्ति का लेटर रहेगा, 4 पन्नों का लेटर रहेगा, उसमें से बीच का पन्ना अगर निकाल दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो हमको पता चलेगा इस लेटर के अंदर ये बात चलती थी, उसके बाद की जो लिंक टूटती है तो ये ऐसी संभावना हो सकती है। तो ये तज्ञों की कमेटी जिनका इसका व्यवसाय हैगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको जोड़ा जाए और तभी पता चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वो बंदा जब ये काम करता था तो वहां पर जो भी संचालक थे उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं थी, वो सभी लोग जानते थे। और ये चीज मैं आज बोलता हूँ ऐसा नहीं, ये पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ और पब्लिकली बोल चुका। एट द सेम टाइम डॉक्टर कादरी, रफली आपको क्या लगता है, आपकी एस्टिमेशन में कितने पेजेस या कितने डॉक्यूमेंट्स या कितनी डायरीज होंगी जो अब नहीं है इन पब्लिक डोमेन? ये तो एक संशोधन का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? मेरे से पहले किसने क्या देखा था, उनको क्या महसूस हुआ था, मैंने जो देखा, जो मैंने फील किया, वही मैं बात करता हूँ और यही मेरा डिमांड रहता है। Okay, but at the same time, Dr. Kadri, I just want to understand from you, from a national perspective. Like I said, एडवीना माउंटबैटन का टॉपिक जो है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है for several reasons. पर क्या लाइन ड्रॉ की जा सकती है कि ये जेन्युइनली एक पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये एक ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है जिससे देश का इतिहास बेहतर समझ सकते हैं हम? देखिए, मैंने वो कॉरेस्पॉन्डेंस देखा नहीं, कभी मेरे को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, मैं उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि हम जब तक देखेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब पता नहीं चलेगा। अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, पढ़ेंगे, तो शायद हम जो अंदाज लगाते हैं वो अंदाज नहीं भी हो और उसके अंदर एक सिंपल सा एक संवाद हो, या उसके साथ साथ उसके अंदर कोई ऐसी बातें भी कही गई हो तो उस पे, जैसे वो पार्टीशन का वक्त था तो उसके बारे में अंदर कहा गया है,
ये जो तो की बात है, मगर जब तक हम देख नहीं पाएंगे, जैसे एडविना माउंटबेटन की बेटी के द्वारा इस संस्था को ये पत्र दिए गए थे, तो क्या इसका कॉपी इंग्लैंड में कोई आर्काइव्स में है? तो ये ज्यादा भी संशोधन का विषय है। और अगर उधर इसका कॉपी है तो वो कॉपी को आज सार्वजनिक कर देना चाहिए, जिससे क्या पता चलेगा कि अंदर क्या है। और ये सार्वजनिक होने के बाद लोग शोध संशोधक जब उसके ऊपर काम करेंगे तो शायद उसमें कुछ हो भी और न भी हो, ये अभी हम कोई उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मगर जो भी है, जहां पर भी अगर इसका कोई जगह पर कॉपी है तो उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, तो जिससे पता चले कि उसके अंदर क्या है। कई बार हम सोचते हैं ये निकलेगा, नहीं भी निकलता होता है, और उस हमारी धारणा के विरुद्ध भी अंदर से निकल सकता। ओके डॉक्टर कादरी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, बस आपसे यही समझना चाहूँगी कि अब आपकी जो अपील है डोनर से वो क्या रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पेपर्स को छुपाने से या ये बात सामने आने से कि पेपर्स डिस्ट्रॉय भी हुए हैं ज़्यादा हार्मफुल है, वर्सेस कि जैसे एंड्रू लॉनी जी भी बता रहे थे कि 33,000 पेपर्स डीक्लासिफाई किए गए और उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला जो गवर्नमेंट पहले सोच रही थी कि ये कागज़ बाहर आ जाएगा तो कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल निकल आएगा और कुछ हार्मफुल निकल आएगा। आपका क्या अपील रहेगा डोनर से? देखिए, देश का जो इतिहास है वो इतिहास एज इट इज बरकरार रहना चाहिए। आप उसको टेम्परिंग करेंगे तो वो गलत होगा। वो इतिहास के साथ, मानव सभ्यता के साथ एक खिलवाड़। तो आपको चाहिए कि जो चीज जो संस्था के अंदर आपने दे दिया था उसी संस्था को खुशी से आपको वापस दे देना चाहिए। आपके सामने अगर कोई भी कार्यवाही होती है तो उससे बेहतर है कार्यवाही न हो, और उसका अगर ओरिजिनल नहीं देना है तो उसका कॉपी भी खुशी से स्कैन कॉपी भी दे देना चाहिए, या हार्ड कॉपी में प्रिंट करा के भी दे देना चाहिए, जिससे हमारे जो संशोधक हैं, हमारे आने वाली जनरेशन जो काम करती है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, वो अपने देश के इतिहास को अच्छी तरह से समझ पाए। अगर कोई भी ऐसी गलत फहमियां हैं, मिथ्स चलती है, तो उसका आपो आप खंडन हो जाता है। एंड डॉक्टर कादरी, आपको क्या लगता है कि कहीं ये कोशिश है टू प्रोटेक्ट द लेगेसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू? देखिए, हर एक का अपना योगदान है, तो उनका जो योगदान है वो उनका योगदान रहेगा। इस तरह से चीजों को हटा देने से या इस तरह से चीजों को नष्ट करने से कोई उसका वो नहीं हो सकता हैगा। नई जनरेशन को अपने आप ही उसका मूल्यांकन करने दीजिए। वक्त अपना तय करेगा कि उनका क्या योगदान था। योगदान हर एक का रहा है, मगर इस तरह से नाश कर देने से, विनाश कर देने से और संदेहास्पद हो जाता है। Okay, all right. Thank you so much, Dr. Kadri. I want to bring in Mr. Andrew Lani back into the conversation. Mr. Lani, I just want to understand from you, and I'll quickly translate a little bit of what Mr. Kadri has told us. He's just said he's a historian, sir, who's been fighting to get the Nehru papers released in India, and he said that certain documents of correspondence after April 1946, which is when discussions on who should be the next leader of India began, are the ones that have gone missing. What really is the timeline as far as the Mountbatten papers are concerned, sir? What periods are we looking at and what crucial years are we looking at? And do you feel that somewhere, if the Nehru papers are made accessible in India, it could possibly help biographers and authors across the world? Well, I don't know if Dr. Kadri has looked at the papers at Southampton University. There are very extensive files there, including on the period after 1946. So he may find there are copies of the papers there or in the British Library, which have been closed or destroyed in India. So I found it very difficult to comment on that. What I'm fighting for is the personal correspondence between Edwina and Nehru from this period of 47 to 60. That's the only thing that in effect remains closed. We have the personal diaries and letters, which were closed of the Mountbattens. Only about 100 redactions out of 33,000 pages remain. And therefore, we're almost there. But I think what is ironic is that previous biographers have been given access to this material, but now they've been shut down, possibly for political reasons,
possibly at the behest of the Indian government. And this is not good for scholarship because it's important for biographers to get a sense of an important relationship like that between the Viceroy's wife and the first Prime Minister. So do you feel that there was somewhere maybe pressure or an attempt from India? Well, I can only speculate, but I suspect that that sounds to be what is happening. And certainly one of the objections that were put up was the Section 27 of the Freedom of Information Act, which is about relations with a foreign country. So they've used that, national security and communications with the sovereign, to shut down the remaining material in the personal diaries and letters. They've not given any reason for the closure of the Nehru correspondence. And that is odd, because even if they said it's at the behest of the Indian government or the Gandhi family, we would at least have some explanation. But as I say, it goes against the purchase agreement, which was signed in 2011, where several £million was paid to the Mountbatten family for this material to be open to scholars. And therefore, they've broken the terms of that purchase agreement by keeping it closed. And at the same time, Mr. Lani, I end this conversation by understanding from you, how does one then draw the line or create a distinction between what is genuinely personal correspondence that perhaps the families do not want to bring into public domain versus what are pieces of information that could really help fill some of the gaps in history? Well, we have to remember that the family sold these papers. Anything that they felt was personal, they kept back, and there are papers still at their country home, Broadlands. But everything that was sold to Southampton University in 2011 was there to be open. And if this material had gone, for example, to an American university rather than to a British one, that material would have been open a decade ago. So it's not the family that are putting up restrictions in Britain, it is the government and Southampton University. Okay, all right. Very further interesting revelations there made by Mr. Andrew Lani and Dr. Kadri. I thank both of them for joining us to take this discussion forward, and hopefully we will be able to delve deeper into this conversation because, as both the panelists have pointed out, it is important to fill those gaps in history. Thank you for watching. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.